गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक गवर्नमेंट कमीशन स्टडी हुई है जो सबमिट हुई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। इसमें कहा गया है कि जो सेंटर की ओल्ड एज पेंशन स्कीम है NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उसमें 45% रियल वैल्यू जो है वो लूज़ हो रही है अगर हम 2012 से देखें ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो सेंटर की जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है 200 से 500 रुपये पर मंथ के बीच में पेंशन्स देने के लिए एल्डरली, विडोज़, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, वो 2012 से रिवाइज ही नहीं हुई है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है उसने जो इसकी परचेजिंग पावर है पेंशन्स की वो 45% तक कम कर दी है। स्टडी ने रिकमेंड किया है कि इन्फ्लेशन लिंक नेशनल फ्लोर पेंशन लेकर आओ ताकि मिनिमम फाइनेंशियल सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट्स इंश्योर हो सके। तो NSAP क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल वेलफेयर स्कीम है, 1995 में लॉन्च हुई थी ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिल सके जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑपरेट करती है और ये सोशल प्रोटेक्शन, बेसिक इनकम सपोर्ट देती है एल्डरली को, विडोज़ को, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को और इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़ को। लेकिन जो पेंशन अमाउंट्स हैं वो लास्ट रिवाइज हुई थी 2012 में। और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंदर जो वन टाइम असिस्टेंस मिलती है 20,000 रुपये डेथ पर प्राइमरी ब्रेड विनर की, वो भी रिवाइज नहीं हुई है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो कि लगभग 221 लाख बेनिफिशरीज़ को कवर करती है, वो उसमें जो है सिग्निफिकेंट जो है आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे क्रॉस स्टेट्स। पेंशन अमाउंट्स जो हैं उन्होंने राइजिंग इन्फ्लेशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है वो अकाउंट नहीं किया है। इंडिया का जो CPI है अगर 2012 में 100 था तो वो 191 है 2024 में, मतलब 91% इंक्रीज़ हुआ है। तो पेंशन जो 2012 में अगर 200 थी तो उसको 382 होना चाहिए था अभी, अगर 500 थी तो उसको 955 होना चाहिए था। तो रियल वैल्यू जो पेंशन की है वो लेकिन असल में डिक्लाइन हुई है 45% से। इसलिए रिपोर्ट कह रही है कि एक नेशनल फ्लोर पेंशन लेकर आओ, और ताकि ये इंश्योर हो सके कि मिनिमम पेंशन लेवल जो है वो यूनिफॉर्म रहे सभी स्टेट्स में। इसको जो है जो पेंशन होती है उसको CPI के साथ लिंक करो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहे विद इन्फ्लेशन, और एनुअल रिविजन्स हो इसमें ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सके। स्टेट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म टॉपअप्स दे सके ताकि सेंट्रल कॉम्बिनेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है पेंशन बेनिफिट्स में ना आएँ। स्टेट्स जिन्होंने हायर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है सेंटर के शेयर से ऊपर जाकर, उसमें उन स्टेट्स में बेटर सोशल आउटकम्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया UAE गोल्ड डील। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस की वजह से जो है इंडिया की इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है, इसलिए PM मोदी ने अर्ज किया है सिटीजन्स को कि पेट्रोलियम यूज़ कम करो, गोल्ड परचेजेस को डेफर करो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाओ। इंडिया के जो हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्टेड गोल्ड पर, वो एक हमेशा से मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो हमने ट्रेड कंसेशंस दिए हैं UAE को एक बायलैटरल डील के अंदर, उससे जो है गोल्ड इंपोर्ट्स और ज़्यादा एक्सेलरेट हुए हैं। इंडिया के जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो शार्पली बढ़े हैं और लगभग 25% इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट ईयर। गोल्ड इंपोर्ट्स वॉल्यूम से तो डिक्लाइन हुए, लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि गोल्ड प्राइसेस 40% से बढ़े तो हमारा जो ये वैल्यूज़ है वो बहुत बढ़ गई। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर्स है ग्लोबली, और 750 टन्स की एनुअल डिमांड रहती है हमारे कंट्री में। इंडिया की जो गोल्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो कुछ चेंज ही नहीं हुई है, हमेशा डिमांड साइड मेजर्स की तरफ हमने जो है वो फोकस रखा है। मतलब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक कर देते हैं जब गोल्ड की हमें डिमांड को चेंज करना हो, और उसमें लिमिटेड सक्सेस मिला है हमें। हायर इंपोर्ट ड्यूटी से क्या होता है, गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ जाती है। ट्रेड जो है गोल्ड का वो उन कंट्रीज से होने लगता है जहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड टैरिफ एक्सेस है। तो ऑफिशियल इंपोर्ट कंट्रोल्स की भी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे वीकन ही हो रही है। तो इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट सिस्टम है वो फिनिश्ड बुलियन पर ज़्यादा फोकस रख रहा है रादर दैन गोल्ड डोर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेमी प्रोसेस्ड गोल्ड। तो टैरिफ कंसेशन जो हमने UAE को दिए हैं उसमें अनइंटेंशनली जो है वो फिनिश्ड बुलियन ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया और वहाँ रादर दैन इम्पोर्टिंग डोर, ठीक है। तो ये शिफ्ट जो है फिनिश्ड बुलियन की तरफ, इससे हमारी कंट्री के जो गोल्ड इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम कोई डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन भी नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम देखें जैसे कंट्रीज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर कोई डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन की है भी नहीं और बहुत डिमांड भी नहीं है, उनकी स्ट्रॉन्ग गोल्ड ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो लो कॉस्ट गोल्ड डोर को हाई प्योरिटी बुलियन में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस करके, और उससे फिर जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन होता है और उनकी जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट का प्रेशर है वो ऑफसेट हो जाता है। जापान में भी ऐसा ही है, गोल्ड रिसाइकलिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर। इंडिया के पास सिर्फ एक ही LBMA सर्टिफाइड रिफाइनरी है, तो इसलिए हमें इस रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया के जो गोल्ड रिफाइनिंग सेक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड और स्ट्रक्चरली वीक है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो एडिक्वेटली एनकरेज नहीं करता रिफाइनिंग को। नैरो ड्यूटी गैप है गोल्ड और रिफाइंड गोल्ड में, तो इसलिए जो है लोग डायरेक्टली जो है रिफाइंड गोल्ड ही मंगा लेते हैं। ठीक है, तो सेक्टर में कई तरह के बैरियर्स हैं, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लिमिटेड फाइनेंस का एक्सेस है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी पॉलिसी इंसेंटिव्स को स्ट्रेंथन करना होगा, ग्लोबली एक्रेडिटेड रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सपैंड करनी होगी और फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ाना होगा ताकि हम रिफाइनिंग की तरफ ज़्यादा जाएं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IFAD ने एक 8 ईयर का कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। जो अब IFAD क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1977 में UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन से बना ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और हंगर को रूरल एरियाज़ में ख़त्म किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये रूरल लोगों को जो है एम्पावर करता है ताकि वो अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर सकें। UNDP का ही ये मेंबर है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। अब कंट्री स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम क्या है? रूरल इनकम को स्ट्रेंथन करने का प्रोग्राम है ये अक्रॉस इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 10th एडिशन जो है इंडियन ओशन डायलॉग का वो ऑर्गेनाइज हुआ MEA द्वारा इन कोलैबोरेशन विद IORA सेक्रेटरीट। IORA है क्या? 1997 में बनाया गया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन स्टेट्स का जो रिम ऑफ इंडियन ओशन में पड़ती हैं। तो इसके मेंबर जो हैं अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और ओशानिया से आते हैं। 23 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका जो एपेक्स बॉडी है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है जो हर साल मिलता है। इसका सेक्रेटरीट इबिन मॉरिशस में है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। टॉपिक सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं 2026 के। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको 1973 में इंस्टीट्यूट किया। ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग नर्सिंग पर्सोनल को दिए जाते हैं अवार्ड्स, ठीक है, जो सेंट्रल, स्टेट या UT या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड हैं। रजिस्टर्ड नर्सेज, मिडवाइव्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स को दिए जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिशियन और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने ग्रीट किया है लोगों को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर। ये डे 11 मई को हर साल मनाया जाता है इंडिया में। ये कमेमोरेट करता है सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरन में हुए थे 1998 में, और ये डे एक्नॉलेज करता है कंट्री की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को। सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे पोखरन रेंज में, राजस्थान में, लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इन टेस्ट को हम ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। ऑफिशियली वहाँ पर जब इसको प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जब ये टेस्ट हुए तो 1999 से ये सेलिब्रेट किया जाने लगा दिन। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इस डे को सेलिब्रेट करता है और इंडिविजुअल्स को नेशनल अवार्ड्स के साथ जो है वो सम्मानित भी करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आगलेगा आइलैंड्स। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है इंडियन ओशन में, आगलेगा जो है वो सिर्फ एक रिमोट आइलैंड टेरिटरी अब नहीं रह गया है। आगलेगा आइलैंड 2 आइलैंड डिपेंडेंसी है मॉरिशस की, वेस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ये दोनों आइलैंड्स कनेक्टेड हैं एक नेचुरल सैंड बैंक से जो जिसे आप फुट से क्रॉस कर सकते हो ड्यूरिंग लो टाइड। इस आर्कीपेलागो इकोनॉमी जो है वो कोकोनट ऑयल के एक्सपोर्ट पे ही मोस्टली रिलायंट है। लगभग 3400 किलोमीटर दूर है ये साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया सदर्न टिप, और इंडिया एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया हुआ है इंडिया ने मॉरिशस के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर 3000 मीटर की लॉन्ग एयर स्ट्रिप और डीप सी जेटी जो है आगलेगा में बनाई है। ये लोकेशन जो है वो ब्रिज करती है इंडिया की वेस्टर्न कमांड को विद अफ्रीका। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is National Social Assistance Program. This topic is important for your social issues and governance section. So a government commissioned study submitted to the Union Rural Development Ministry has found that Centre's old age pension scheme under the National Social Assistance Program has lost nearly 45% of its real value since 2012 due to inflation. So Centre's contribution of 200 to 500 rupees per month towards pension for elderly persons, widows and persons with disabilities has remained unchanged since 2012. Inflation has reduced the purchasing power of these pensions by nearly 45%. Study has recommended introducing an inflation-linked national floor pension to ensure that minimum financial security across states remain. So this NSAP is a centrally sponsored social welfare scheme launched in 1995 to provide financial support to vulnerable sections of society living below the poverty line. This scheme operates under the Ministry of Rural Development. This program aims to ensure social protection and basic income support for elderly people, widows, disabled individuals, and economically weaker vulnerable families. The pension amounts under NSAP were last revised in 2012. At present, the center provides pension
and also in the National Family Benefit Scheme, a one-time assistance of 20,000 rupees is provided to the families upon the death of the primary breadwinner. Currently, the old age pension scheme reportedly covers more than 221 lakh beneficiaries. So, NSAP has observed that the report on NSAP has observed that the pension amounts have not kept pace with the rising inflation and consumption expenditure. India's CPI increased from 100 in 2012 to 191 in 2024, which reflects a cumulative inflation rise of nearly 91%. So, as if we adjusted with inflation, then a pension of 200 rupees in 2012 should have been 382 rupees in the same period of 2024. Similarly, 500 rupees pension should have increased to nearly 955 now. The report has said that real value of the pension has effectively declined by nearly 45%. So therefore, the report has recommended the introduction of a national floor pension, and this would ensure a minimum pension level that is uniform across all states, and this pension should be linked to CPI. This must automatically adjust with inflation, and it should include annual revisions based on cost of living changes. So states should also provide transparent and uniform top-ups over the central contribution to reduce regional disparities in pension benefits. Study has also highlighted that states which are offering higher pension contributions in addition to the center's share have demonstrated better social outcomes. So the next topic is India UAE gold deal. This topic is important for your economy section. So rising oil prices due to the ongoing West Asia crisis have increased pressure on India's economy, prompting PM Modi to urge citizens to reduce petroleum use and also defer gold purchases. So India has heavy dependence on imported gold, which is a macroeconomic vulnerability for us. So economists suggest that trade concessions which have been granted to UAE under a bilateral deal may have further accelerated gold imports. So India's gold import bill rose sharply in last year, increasing nearly 25%. And the gold imports by volume may have declined, but because the gold prices surged by over 40% in the year, it significantly inflated the overall import bill. India remains one of the world's largest gold consumers with annual demand of 750 tons, and experts argue that India's gold management strategy has remained largely unchanged, and we have focused only on demand side measures like import duty hikes, which have delivered limited success. Higher import duties rather often encourage smuggling, divert trade through the gold trade is diverted through countries which have preferential trade tariff access to India. It also weakens the effectiveness of official import controls. So India's gold import system is heavily dependent on finished bullion rather than the gold ore, that is the semi-processed gold. So according to IIM Ahmedabad study, tariff concessions which have been given to UAE through the trade agreement unintentionally made importing finished bullion more attractive. So this shift towards largely bullion imports has increased countries' gold import bill rather than supporting domestic value creation. So if we compare it with countries like Switzerland, which have no domestic gold production, but they have built strong gold trading positions through world-class refining infrastructure, they process low-cost gold ore into high-purity bullion, and they generate significant revenue from it, and therefore it offsets their trade deficit pressures. Japan has also developed a strong gold recycling capacity through urban mining. India currently only has one refinery certified, one LBMA certified refinery. Okay, so India's gold refining sector remains underutilized and structurally weak. Because India's duty structure has not adequately encouraged refining, there is narrow duty gap between gold ore and refined gold, which has reduced profitability for domestic refiners. This sector faces multiple barriers, including high working capital requirements, limited financing access, regulatory complexity, and prevalence of informal operations. So therefore, India must strengthen its policy incentives, expand the globally accredited refining capacity, and improve financial support if it wants to reduce gold import dependence and improve trade resilience. So the next topic is International Fund for Agriculture Development. This topic is important for your social issues and international relations. So Government of India and IFAD have launched a new 8-year country strategic opportunities program. So what is IFAD? It's a specialized agency of UN. It was founded in 1977 through a UN General Assembly's resolution. It is dedicated to eradicating poverty and hunger in rural areas of developing countries. The aim is to empower rural people to increase their food security and improve the nutrition of their families. It is also a member of the UNDP, and its headquarters is in Rome. So this country strategic opportunities program is aimed to strengthen rural incomes, improve their resilience, and expanding sustainable livelihood opportunities across the country.
So the next topic is Indian Ocean Rim Association. This topic is important for your international relations. Recently, the 10th edition of Indian Ocean Dialogue was organized by MEA in collaboration with Indian Ocean Rim Association Secretariat. So Indian Ocean Rim Association was established in 1997 as an intergovernmental organization of states on the rim of the Indian Ocean. So it has members from West Asia, Africa, South Asia, Southeast Asia, Europe, and Oceania, and it currently comprises of 23 member states and 12 dialogue partners. So the apex body of this IORA is the Council of Foreign Ministers, which meets annually, and this secretariat is based in Abin, that is in Mauritius. So the next topic is National Florence Nightingale Award. This topic is important for your social issues. President of India has conferred the National Florence Nightingale Award for the year 2026. So this award was instituted by the Ministry of Health and Family Welfare in 1973. It is a prestigious award given to outstanding nursing personnel employed in central, state, UT, or voluntary organizations. So this award is presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse, midwives, and lady health visitors serving across central and state governments, UTs, and voluntary organizations. Who was Florence Nightingale? She was an English social reformer, statistician, and a founder of modern nursing. So the next topic is National Technology Day 2026. This topic is important for its science and tech section. PM Modi greeted people on National Technology Day. This day is celebrated on 11th May every year, commemorating the successful nuclear tests conducted at Pokhran in 1998. This day acknowledges the country's scientific achievements, and on this very day in 1998, successful nuclear tests were conducted at Pokhran range in Rajasthan, led by Dr. APJ Abdul Kalam. These tests were known as Operation Shakti, and this day was officially declared by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 1998, and since 1999 it has been celebrated as National Technology Day. On this very day, Technology Development Board of India celebrates it by awarding individuals with national awards for their contribution to science and technology in India. So the next topic is Agalega Islands. This topic is important for international relations. So as strategic competition in the Indian Ocean is intensifying, Agalega is no longer seen as a remote island territory. So Agalega Islands are a two-island dependency of Mauritius in the western Indian Ocean. These two islands are connected by a natural sandbank which can be crossed on foot during the low tide. The archipelago's economy is mostly reliant on the exportation of coconut oil. It lies about 3,400 kilometers southwest of India's southern tip, and India, under a bilateral agreement with Mauritius, has constructed a 3,000-meter long airstrip and deep sea jetty on Agalega. This location bridges India's western command with Africa. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.